Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Ali Wahid and you are on the channel of Medicare. So in this lecture we are going to start about the rules of probability. In a previous lecture we have discussed what is the probability, what is the sample space, what are the events, what are the types of events. Now we are discussing there are some rules of probability and what they are. Let's discuss them. So actually, the total rules of probability are five rules, and the first rule of probability is the permutation. What is permutation? We have solved all the whole chapter or chapter number 7 about it. So permutation is the arranging the objects in a specific order. So what is the formula of it? So its formula is P is equal to n factorial over n minus r factorial. So we have solved a lot of questions about that formula. Second rule of probability is the combination. So it is a selection of object without considering the order. So its formula is C is equal to n factorial over r factorial n minus r factorial. So this was the second rule. Third rule is about the counting of sample point. Actually, the counting of sample point is not the rule, but it is a concept which used to solve the questions of probability. So doesn't consider it as a rule, but I have written it because your book has write it in it. So what it is the mean total number of outcomes in a sample space. Okay, कितने नंबर ऑफ आपके टोटल आउटकम्स हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उनको काउंट कैसे करना है हमने. सो इट कैन बी डन बाय यूजिंग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन. इन दो को यूज़ करके हम लोग इनको काउंट कर सकते हैं. स्टेप्स क्या हैं इसके? फर्स्ट यू विल डिटरमाइन द सैम्पल स्पेस, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके कितने आउटकम्स हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं. देन उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी. कैसे फाइंड आउट करना है? बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ इवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. ये आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. अच्छा, थर्ड स्टेप क्या होगा? So now your third step is to find the permutation and combination. So अब आप क्या करेंगे कि अरेंज करना है. परम्यूटेशन क्या है कि किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, और कॉम्बिनेशन क्या है कि हमने उसे ऐसे ही बगैर अरेंज किए लिखना है. सो अब आपने किसी भी डाटा को या कोई भी प्रोबेबिलिटी के आंसर को अरेंज करके लिखना है तो आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे. Fourth rule is the addition rule. It states the probability is the union of two mutually exclusive events. Two mutually exclusive events, we have explained it in the previous lecture, that these are the events which are not occurring simultaneously, means at the same time. So they have nothing common in them. So addition rule is probability is equal to event A plus event B. दोनों events को हम add कर रहे हैं और दोनों events, जैसे event A जो है वो even number है, इवन बी सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, तो दोनों डिसजॉइंट सेट है. मीन दिस सेट हैज नोथिंग कॉमन बिटवीन दैम. दोनों बिल्कुल अलग हैं. सो दिस रूल हमेशा तब अप्लाई होगा जब आपके पास इवेंट जो हैं वो अकर नहीं हो रहे होंगे साइमल्टेनियसली, यानी आपके इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए. अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट है, लेट्स सपोज कि मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देती हूँ कि मैं 5 की जगह यहाँ पर एक इवन नंबर यानी 4 लिख देती हूँ. सो अब इनमें एक चीज़ कॉमन है, अब ये डिसजॉइंट सेट नहीं रहे, अब हम इनके ऊपर एडिशन रूल अप्लाई नहीं कर सकते. सो इसलिए ज़रूरी है कि इनका डिसजॉइंट सेट होना ज़रूरी है. So now let's define about the multiplication rule, which is the fifth and the last rule. Multiplication rule is divided into two groups. First rule is for the independent event and second is for the dependent event. Independent event, we have discussed it in the previous lecture, that these are the types of event which are not uh, affecting the other events. ठीक है, like event A and B, they are independent, but the probability is the product of both events. So these events are not disturbing each other and we simply going to multiply them. One thing you have to remember, in your book, instead of E, the P word is used. But I think for the event, we should use E. But in your books, P is written. So if you have to write the P, you can write because your book has written it. So, but in my case, I will prefer to write E because we are going to define event, not the probability of A. Okay. So the second type of event
in the multiplication rule is the dependent event. So that is the case for the dependent event if the two events A and B are dependent on each other. And one thing the case is occur here if the event A has already occurred, कि आपका event A हो चुका है और अब B event occur हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे E A, यानी A वाला हो चुका है और E B ओवर A, ठीक है, तो ये शो करेगा कि A हो चुका है और B हो रहा है, ठीक है। सो ये थे हमारे रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में हम लोग 7.5 एक्सरसाइज करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। So I hope that you understand this lecture. If you like it, then please subscribe to my channel, like my videos, and also press the bell icon to get the notification of all the videos which I uploaded. Thank you so much, guys. Meet you soon in the next lecture. Till up, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।